Hello students, in this video we will discuss Newton's second equation of motion. Previously we have discussed Newton's first equation of motion wherein we have derived v is equal to u plus at, which is also known as velocity time relation. Newton's second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, which is also known as position time relation. So second equation of motion is known as position time relation, and we are going to derive this equation graphically. So this is a velocity time graph. In one axis we need to take time. It is just the same graph which I have plotted in first equation. Velocity in y-axis, time in x-axis, and this is the origin. For this graph, the nature of the slope should be a uniform acceleration, and also we will take the straight line starting from this position instead of 0. हम जो स्लोप लेंगे इस ग्राफ का वो 0 से स्टार्ट नहीं होके उस ऑब्जेक्ट की कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी यहाँ से शुरू होती है. सो दिस इज a uniformly accelerated motion. Okay, now we will join the points. This is our initial velocity, this is the final velocity. We will join the line in order to identify this velocity. इस एक्सिस से हम join करेंगे इस पॉइंट को, टाइम एक्सिस से vertically join करेंगे to identify the final velocity, and we will join this line also. Let us name it. So these are the points and this is my graph for uniformly accelerated motion in order to derive this equation. Okay. अब हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन हमारा एक पोजीशन टाइम रिलेशन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है s, and s is nothing but the distance or displacement. Okay. और graphical method में s is always calculated by calculating the area enclosed within the graph. Okay, तो एरिया enclosed within the graph मतलब अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहें ग्राफिकल मेथड से तो हमें उस ग्राफ की एरिया फाइंड आउट करनी होगी. तो इस ग्राफ में हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा. इस स्लोप के नीचे वाले पोर्शन का एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ द एरिया विद इन दिस graph will be this area. Okay, this area. Now you may wonder that why we have not considered this area. तो एरिया इंक्लोज विद इन द ग्राफ मतलब इस स्लोप के नीचे वाले पोर्शन को हम कंसिडर करते हैं. दिस विल बी कंसिडर्ड एज द टोटल एरिया इनसाइड द ग्राफ. दिस विल बी नॉट कंसिडर्ड. ओके, नाउ इफ़ यू विल कंसिडर दिस एरिया, अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ हमें एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाई देता है. दैट ज्योमेट्रिकल शेप इज इनक्लोज्ड बाय दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ अ रेक्टेंगल. आप देखिए ये एक रेक्टेंगल और ये रहा हमारा एक ट्रायंगल. तो ये टोटल शेप जो है ये एक ट्रेपेजियम का शेप है जो कि हम एक बोल सकते हैं. ये रहा हमारा रेक्टेंगल ACDO एंड दिस इज़ माय ट्रायंगल ABC. तो अगर हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करनी है तो हम इंडिविजुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को कंबाइन करें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगी वहाँ से. तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया. सो फर्स्ट वी विल गो फॉर द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस area of rectangle. This is my rectangle ACDO. Okay, तो हमें टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को सम अप करने से मिलेगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस
area of rectangle is calculated by the formula length into breadth. So length is OD and breadth is OE. So I'm just writing here length into breadth. So I have substituted the formula for finding out the area of triangle ABC and area of rectangle ACDO. That is half into base into height plus length into breadth for calculation of the area of rectangle. Now we can write down all the data which we can find out from the graph, and here we can see clearly that OA from point O to point A was the initial velocity, because the body was not starting from origin from zero velocity. It was already having some velocity, that is u. So OA is our initial velocity. Okay, now if OA is initial velocity, if this point is initial velocity, then the opposite face, that is CD, will be also our u, because both are parallel and equidistant, right? So we can write OA is equal to DC or CD is equal to u. Okay, now from O to E, this is our final velocity. Now if this is final velocity, then this line will be also our final velocity. So we can write here BD also equal to final velocity. This is V, so this BD will be also V. So here it will be OE will be equal to BD equal to V. Now this line OD, what is this? This is my time. So if this is time, then this line which is just parallel to this line will be also T. So OD will be equal to AC. OD will be equal to AC equal to T. Now we will just put this information over this formula. Half into base into height. In this triangle, which is the base? This is my base, right? So AC we can write here in place of base into height, this one. So BC, right? This is the rectangle. So this is for the triangle, plus length into breadth. In this rectangle, the area is length into breadth, which is the length. OD is the length. So OD into breadth, which is the breadth. CD आप ले लो या फिर AO ले लो, both are equal. So I am taking here CD. Okay, OD is the length and CD is the breadth. From this box we will write half into AC. What is AC? आप देखिए AC हमारा टाइम है, तो हम AC के प्लेस में T लिख सकते हैं, into BC. अब इस बॉक्स के अंदर हमारे पास BC के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इवन ग्राफ से भी अगर हम फाइंड आउट करें तो BC के लिए, फॉर दिस BC वी डोंट हैव एनी लेबलिंग ओवर हियर, बट वी कैन फाइंड आउट न्यूमेरिकली. अगर इस ग्राफ को आप देखिए ध्यान से तो BC तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर इस पूरे लेंथ में से, इस लाइन में से अगर हम CD को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें BC की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट? सो BC विल बी equal to BD minus what? CD, right? BD minus CD. ठीक है, तो हम लिख दें BC के प्लेस में BD minus CD, BD minus CD. ओके, प्लस OD क्या है? अब आप देखिए OD, this is my OD और OD is my time. तो time into CD. CD is what? CD is U. तो यहाँ पे U. अब ध्यान देने वाली बात कि BD और CD के प्लेस में हम क्या लिखे, तो what is BD? तो आप देखिए half into T into BD. BD is V minus CD. CD is U, V minus U. Okay, plus T into U. Fine. V minus U आ गई हमारे पास यहाँ से, V minus U.
तो अब आप याद कीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इस u को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए तो दिस विल बी गिविंग अस v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ए टी। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, हाफ इंटू टी एंड दिस इज इक्वल टू ए टी। ओके, प्लस t into u. Now just simplify, half into t into at, this will be half t into t square into at square. यहाँ से यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए, t into at square into half, so half at square plus t into u, what it is ut, and what we have just calculated this for डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एक्सप्रेशन फाइनली क्या मिलता है राइट हैंड साइड में, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो वी हैव डिराइव्ड एस इज इक्वल टू, अरेंज कीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड। ओके, so second equation of motion we have derived graphically. We will see the third equation of motion also in my next video. Thank you.